वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस। हम बात कर रहे थे टोपोलॉजी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। अभी तक हमने ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट और लिमिट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। हमने ये भी देखा है कि इंटीरियर पॉइंट्स की हेल्प से हाउ कैन वी डिस्कस द ओपन सेट्स। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज सेट. We will define the closed set first and then we'll look into the examples and theorems. Okay, so let us start this lecture by defining the closed set. So we have the first definition, and this definition will define closed set. So a subset F of a metric space x comma d is said to be closed if it contains each of its limit points. That is, if we know कि अगर कोई हमारे पास सेट है f, देन इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट विल बी डिनोटेड बाय f प्राइम. दिस इज द डिराइव्ड सेट. अब सारे लिमिट पॉइंट इस सेट के अंदर ही आने का सेंस क्या है, दैट दिस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट f ओनली. ओके, सो क्लोज सेट का मीनिंग क्या हुआ, दैट इफ वी हैव अ सेट, subset of a metric space xd, and if we consider the limit point of this subset f, then no limit point should be outside from this f. दैट इज, अगर इनके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हर लिमिट पॉइंट इस सेट एफ का ही एक एलिमेंट होना चाहिए. अगर आपको कोई ऐसा लिमिट पॉइंट मिल रहा है जो कि इस सेट एफ के अंदर नहीं आ रहा है, तो उस केस में वी विल कॉल दिस सेट एफ एज नॉट क्लोज्ड सेट. ओके, we can give the another definition for this closed set also, that is, you can say if no limit point is outside from the set f, then the set f is said to be closed. ठीक है, आप ये डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हैं. नाउ लेट अस लुक some examples so that we can understand this definition, and I'm taking the well-known examples. First of all, examples, and this is 2.1.22, and this is first example. It says the set Z is closed in R. This is a set of real number, this is a set of integers. We know that whatever the derived set of Z, that is, we know that no real number is a limit point for the set of integers. Okay, so the set of all limit point is phi, and of course phi is subset of every set. So I can say this contained in Z, and thus Z is closed, right? Or you can say, suppose हम आपको अगर ये वाली definition समझाऊं, so we will suppose have this R, and somewhere suppose this represent the set of integers. ओके, सो यू कैन सी इसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ पर अवेलेबल कोई भी पॉइंट इस z का लिमिट पॉइंट नहीं है. इसका मतलब इस z से बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, चाहे वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट वी आर श्योर कि इस सेट ऑफ इंटीजर से बाहर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने इस z को क्लोज सेट बोला. ठीक है, and the same thing can be given for the set of natural number also. So again, if we take the set f
that is equals to 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on, 1 by n and so on. Okay, of course the sequence is 1 by n sequence. Okay, is not closed. कैसे? You can see the limit point of the set is 0 only है ना, ये sequence कहाँ converts कर रहा है? 0 पे. Okay, since we know that 0 is the only limit point of f, and of course and 0 is not in f, so we have a limit point of the set which is not in the set, this not in the set f. Okay, so therefore you can say therefore f is not closed in R. अब यहाँ पे R कहने का मतलब है we are thinking about the usual metric with the set of real numbers. Okay, now come to the third example, and this is considering a set in the complex numbers. So the set f that is equals to x comma y belongs to C such that x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0. Okay, is closed in C. You can see how we know that since if we talk about the f prime, that is the set of all limit point for this one, so you can see कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का हर एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के लिए लिमिट पॉइंट है. सो यू कैन सी दिस एफ प्राइम विल बी द सेट x, y belongs to C such that x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0, right? And of course every set is a subset of itself, so I can say this f prime that is equal to the set f is same as this f. Okay, that's why this f prime is a subset of f, and therefore this f is closed in C. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं डिटेल्ड में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैट्रिक डिफाइंड है. ठीक है, सो दैट ईच सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड. हमने ये शो किया ही था कि डिस्क्रीट मैट्रिक में हम कोई भी सबसेट की बात करें तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, कैसे नहीं करता है? क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट है उस पर हम किसी भी रेडियस का, चाहे स्मॉल रेडियस हो या फिर लार्ज रेडियस हो, जब भी हम कैसे भी इस पर बॉल बनाए उस बॉल में सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट आना ही चाहिए, राइट? हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेट मी राइट द डेफिनेशन देन आई विल कम अगेन टू दिस पॉइंट. सो यू नो दैट d of x comma y is equal to 0 when x is equal to y and 1 when x is not equals to y, right? Now you can say जब आप रियल नंबर जब इस रेडियस की बात करेंगे, इस रेडियस की, तो ये बॉल को डिसाइड करता है, और बॉल को हमने डिफाइन हमेशा इसी तरीके से किया है कि इसमें उस तरीके के पॉइंट्स हैं जहाँ पर जैसे हम x नॉट पर बात कर रहे हैं तो हम ऐसे x को कंसिडर कर रहे हैं जिनकी डिस्टेंस लेस देन r है, राइट? अब अगर ये r लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो इस बॉल में केवल x नॉट ही आएगा, और अगर ये r ग्रेटर देन है तो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, राइट? बट इन बोथ द केसेस अगर मैं कहूँ कि हमें तो लिमिट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए r की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं चूज करनी है, हम r की वैल्यू कैसे भी चूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम r की वैल्यू लेस, सपोज जैसे हमने 1/2 चूज कर ली, जैसे हमने प्रीवियस किसी वीडियो में देखा भी था कि अगर r इक्वल्स टू 1/2 है तो इस तरीके की बॉल में x नॉट कोमा r, इसमें हमेशा केवल सिंगलटन पॉइंट x नॉट ही रहेगा, राइट?
और हमें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में क्या है कि इस बॉल का हमारे सेट के साथ जिसका भी हम लिमिट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ इस पॉइंट के अलावा इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ हो, है ना, कोई पॉइंट हो। बट हमें तो दिख रहा है कि इस बॉल में एक्स नॉट के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं है। सो आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली दैट लेट f be any subset ऑफ x। ओके, अगर एम्प्टी है तब तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, और अगर नॉन एम्प्टी है तब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी के केस में तो ऑब्वियसली क्लोज्ड ही रहेगा। सबसेट ऑफ x which is नॉन एम्प्टी, ठीक है। देन फॉर आर इक्वल्स टू सपोज 1/2, मैंने 1 से कोई भी लेस एन इक्वल्स टू वैल्यू चूज करनी है, मैंने 1/2 चूज कर ली, ठीक है। देन फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर आई कैन से दिस सेट एक्स नॉट कोमा आर that is 1/2 with the intersection of f is equal to only x naught, right? This will be the only intersection as this is equal to x naught only. Okay, here you can see whenever r is equal to 1/2 then this ball contains only x naught, जो भी इसका सेंटर केवल वही इसके अंदर पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज let f be any set of x which is non-empty, then for any you can see, then for x naught belongs to f and r equals to 1/2 we have this scenario, okay, that is uh, that is x naught is not a limit point ऑफ एफ। और ये बात हमने किसी भी सबसेट के बारे में बात की है, इसका मतलब एक्स के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। एंड यू कैन सी एंड थस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी limit point of f. So you can say f prime is equals to phi for all subset f of x। तो x का आप कोई भी सबसेट लेंगे उसके लिए हमेशा f प्राइम phi ही मिलेगा। एंड you know that f prime that is equals to phi is always a subset of every subset, okay, and this is true for all f that is subset of x, and thus you can say hence f is closed, and since f is arbitrary subset, तो इसका मतलब जो हमने डिस्कशन किया है दैट इज ट्रू फॉर एवरी सबसेट ऑफ एक्स, आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ एक्स, देयरफॉर एवरी subset of x is closed, okay। So this is how you can prove this statement, or you can write the solution of this particular example. Now come to an important part of this lecture in the form of proposition. This is proposition 2.1.23, okay। It says let f be a subset of the metric space x comma t, the set of limit points that is limit points of f। इसको हमने कैसे डिनोट करा है, namely f prime,
right, is a closed subset of x comma d. That is, क्लोज्ड सबसेट बोलने का मीनिंग क्या है? वी आर हैविंग अ सबसेट एफ। अब हमने इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लिया। हम कह रहे हैं ये जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है, दिस इज अ सबसेट, ओके, और दिस इज अ सबसेट विच इज क्लोज्ड। अब कोई भी सबसेट क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि उस सेट का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन is completely lie in this set particular, okay. So I can say, अगर मैं f प्राइम की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो भी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है दैट मस्ट बी इन दिस सेट ऑफ ओ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ f, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक सेट को क्लोज्ड प्रूफ करना है, एंड लेट मी टेल यू इन जनरल कि हम किसी भी सेट को क्लोज्ड कैसे प्रूफ करते हैं। सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम इन विच वी वांट टू प्रूव दैट द सेट ए इज क्लोज्ड। तो हम क्या करेंगे, इस सेट ए के जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका कलेक्शन लेंगे, दैट इज ए प्राइम, और देन हम ये शो करेंगे दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। अगर हम ये शो कर पा रहे हैं दैट दिस ए प्राइम इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट दिस सेट ए इज कंटेनिंग ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ओके। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें जो दिख रही है दैट इज इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ऑफ शोइंग अ सेट टू अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, राइट। सो हमें इस ए प्राइम सेट को इस ए के लिए सबसेट बताना है, और हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि किसी भी एक सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट कैसे हम शो कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ए प्राइम से एक एलिमेंट लेते हैं और फिर शो करते हैं कि वो एलिमेंट इस सेट ए का भी एलिमेंट हो जाए, और दैट विल शो दैट a prime will be a subset of this a, okay. So we will choose an element from a prime, और हम देखेंगे कि जो भी a प्राइम में होने की प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास जो एलिमेंट है दैट हैज़ अ प्रॉपर्टी फॉर बीइंग इन दिस सेट a ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शो करना है दैट f इज क्लोज्ड, इसका मतलब हमें बता f प्राइम इज क्लोज्ड, इसका मतलब f प्राइम का प्राइम will be contained in f prime, right। अब again we are having two sets, और हमें बताना है कि एक सेट this set f prime, this set f prime of prime is contained in f prime, okay। So we will choose an element from this set and will show that that is a element of f prime। अब f prime में होने की क्या कंडीशन है और f डबल प्राइम में होने की क्या कंडीशन है, we will use those conditions only, okay। So let us start the proof. I have already told you the construction now. So we will consider some element from the f prime of prime। So ऐसा पॉसिबल है कि हमारा सेट ऑफ ऑल द लिमिट्स पॉइंट्स, यानी कि इस सेट एफ के पास कोई लिमिट पॉइंट हो ही ना, ठीक है। सो इफ द सबसेट एफ हैज नो लिमिट पॉइंट, दैट इज, अगर हम इस सेट एफ के सेट ऑफ प्राइम नंबर लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लें, इफ दिस इज इक्वल्स टू 5, देन 5 सेट का लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या होगा, 5, ओके। देन एफ प्राइम ऑफ प्राइम दैट इज सेम इज 5 प्राइम, क्योंकि एफ प्राइम का मीनिंग क्या है, 5, और 5 सेट के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते, ठीक है। सो यू कैन सी, एंड सो f prime of prime contained in f prime, and thus this f prime is closed, right, and thus f prime is closed। इसका मतलब अगर हमारे ओरिजिनल सेट f के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस केस में इट्स सेट ऑफ लिमिट पॉइंट विल बी क्लोज्ड, क्योंकि ये सेट 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम मानते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम लिमिट पॉइंट, ओके। नाउ suppose that f has some limit point,
Okay, that is, you can say, that is, let f prime is not equals to 5, कोई ना कोई इसके पास लिमिट पॉइंट है. ओके, अब जब ये लिमिट पॉइंट है तो हम इस सेट के लिमिट पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है, नाउ let f is not equals to 5 and let there exists some element x naught in this set of all prime set of all limit point of f. ठीक है, अब हम ये शो करेंगे that this x naught is a member of the set f prime. ठीक है, let me call this supposition is 1. Okay, now to show that f prime contained in f prime, we need to prove that this x naught is a member of f prime also. ठीक है, हमें ये शो करना है बेसिकली. नाउ क्योंकि एक्स एफ प्राइम में किसी भी एलिमेंट का आने का मीनिंग है दैट दिस एलिमेंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ. तो बेसिकली हमें इस, क्योंकि अभी हम जो लिख रहे हैं एक्स नॉट इज अ मेंबर ऑफ प्राइम ऑफ एफ प्राइम, इसका मतलब एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ. ठीक है, हमारे पास सेट एफ था, उस एफ का हमने सारे लिमिट पॉइंट कलेक्ट किए, उस लिमिट पॉइंट के सेट के जो भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका ये मेंबर है एक्स नॉट. ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि ये जो एक्स नॉट है दैट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑल्सो. ठीक है, सो इसके लिए हमें बस एक्स नॉट पर एक बॉल कंस्ट्रक्ट करनी है और शो करना है कि उस बॉल में आर्बिट्री बॉल कंस्ट्रक्ट करनी है. ओके, कोई भी बॉल हो सकती है और हमें ये शो करना है कि उस बॉल में एफ के मेंबर्स हैं. ठीक है, सो if x naught is in f prime of prime, then we can choose an arbitrary open ball as x naught comma r with center x naught and radius r. ठीक है, क्योंकि ये x naught is a member of लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ f, इसका मतलब x naught पर हम जो भी बॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल हैव सम पॉइंट फ्रॉम f प्राइम. ओके, सो यू कैन से सिंस x naught is a limit point of the set f prime, therefore by the definition of limit point there exists a point, क्योंकि हर एक बॉल में इस सेट का कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो इस बॉल में भी इस सेट का कोई पॉइंट होगा. देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट y that is from f prime such that this y is a member of the ball x as x naught comma r. ठीक है, नाउ इफ यू से हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है दैट वी हैव अ बॉल, सपोज दिस इज आर एक्स नॉट. ओके, हमने इस पर एक बॉल का कंस्ट्रक्शन किया. हम कह रहे हैं कि वी हैव अ पॉइंट, सपोज क्योंकि दिस एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एफ प्राइम, तो हमने एफ प्राइम का एक मेंबर लिया है y. सो आई एम सेइंग सपोज समवेयर वी हैव दिस y एंड दिस इज फ्रॉम एफ प्राइम. ठीक है, जो कि इस बॉल के अंदर रहेगा, तो ये इस बॉल के अंदर है. नाउ वी नो दैट द रेडियस ऑफ दिस बॉल इज r and the distance from these two points, suppose this is the distance, is d of x naught comma y. अब हम ये कह रहे हैं कि इस r और इस डिस्टेंस का जो भी डिफरेंस है
उस डिफरेंस से अगर हम कोई एक बॉल कंस्ट्रक्ट करें, दैट इज इफ वी कंस्ट्रक्ट अ बॉल हियर and the radius of this ball is r prime, और ये r prime क्या है? This is the difference from this difference of r and the distance of x naught comma y. Then what is a beautiful thing about this green ball? Let me write that first. So you can see, then if this y is in this, now if we define r prime, that is equals to r minus distance between x naught and y, then the green ball is y r prime. Now this ball contains, here you can see this y is a member of f prime. इसका मतलब y is a limit point of this 8 f. Okay, then as y comma r prime contains infinitely many points of f, is y is member of f prime, that is y is a limit point of f, क्योंकि y f प्राइम में से बिलोंग कर रहा है तो ये f का एक लिमिट पॉइंट हुआ. इसका मतलब y को सेंटर मानकर हमने जो भी ओपन बॉल बनाई है, दैट ओपन बॉल विल कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दिस सेट f, क्योंकि f का लिमिट पॉइंट है, राइट. अब हमें ये पता है कि ये जो ग्रीन बॉल है, दैट कंप्लीटली लाई इन दिस रेड बॉल, एंड दैट रेड बॉल, दिस रेड बॉल is as x naught comma r, and this green ball, of course this green ball is as y comma r naught. हम कह रहे हैं इस ग्रीन बॉल में अगर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है f के, तो क्या इस रेड बॉल में भी f के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं हो गए? और जैसे ही इस रेड बॉल में जिसका सेंटर एक्स नोट है उसमें f के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए हैं, और ये जो बॉल थी रेड बॉल, दैट वाज आर्बिट्ररी बॉल, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक्स नोट पर बनाई हुई आर्बिट्ररी बॉल में हमेशा f के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और जब कभी भी ऐसा होगा दैट मीन्स एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट f, राइट. सो since this is y comma r prime contained in S y this is x naught comma r, therefore you can say the open ball is x naught comma r contains infinitely many points of f. Now you can say also this ball is arbitrary, right? So we can say that every open ball is x comma r x naught comma r centered at x naught contains infinitely many points of f, and hence x naught is a limit point of f. अब जैसे ही ये लिमिट पॉइंट हुआ, दैट इज दिस x naught is member of f prime. Now let me call this as conclusion 2. Now क्योंकि हम कहाँ से चले थे, that x naught is a member of prime of f prime. Okay, so from these two I can say, so from 1 and 2 we have that x belongs to f prime of prime, this is implying that x naught
is in f prime and which shows that f prime of prime is a subset of f prime and this is what we want to prove कि अगर किसी सेट का डायराइव्ड सेट सेट के अंदर ही चला जाए तो वो एक क्लोज सेट बन जाएगा ओके दैट इज f prime is a closed subset in x, d ठीक है तो बेसिकली हमने ये प्रूफ कर लिया है कि मैट्रिक स्पेस में कोई भी सबसेट हो उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हमेशा एक क्लोज्ड सेट होता है ठीक है